Okay, welcome. Today we will discuss about samskaras and overall understanding of samskaras. Okay? And we will not discuss the samskaras in detail, but we will have a superficial look on different types of samskaras which are conducted in the childhood period. So, samskaras, as we know, samskaras are nothing but the certain procedures which are done in the childhood period, and samskaras during the period of uh, that is antenatal period, and samskaras are also explained during the childhood period, and samskaras is also explained in the later part of the life also. Anyway, so 16 samskaras are mainly explained, and in the Ayurveda books we find only few samskaras. सभी संस्कार जो बताए वो सभी में जो है आयुर्वेद संहिता में नहीं है, कुछ जो है संहिता है वो धर्म ग्रंथों में है, ठीक है, कुछ संहिता कुछ जो है संस्कार वो संहिता में भी पता है. So first samskara which is explained, which is done immediately after birth. Now we can divide samskaras into three parts. Samskaras conducted in the antenatal period of the mother, samskaras conducted during the first year of the life, or samskaras conducted during the childhood period, and samskaras conducted after the pubescent period or after the puberty. Okay, so like that we can divide the samskaras in three parts. Samskaras done in the antenatal period are mainly Garbhadhana samskara. Then comes Upasana samskara. Then comes Semantonana samskara. Whereas samskaras done in the childhood period, we start from Jatakarma samskara, Namakarana samskara, Surya Darshana samskara, Chandu Darshana samskara, Nishkamana samskara, then Annaprashana samskara, Phalaprashana samskara. Then comes Upaveshana samskara. Then comes Karnavedana samskara, Purakrama samskara. Then comes Akshara Lekana samskara, Vedharama samskara. Then comes Upanayana samskara, then comes Godhana samskara, Vivaha samskara, etc. Okay. So up to Upanayana samskara, we can conclude that this is a childhood samskara. Later Godhana samskara, etc., Vivaha samskara, Godhana, they are samskaras connected during the puberty period. And the last samskara which is included in the Dharma Grantha is Antyeshti samskara, that is Shridharma, after death. That is the last samskara, Antyeshti samskara. Okay. Now let us have the details. The first samskara which is explained in classics, and this is also explained in Ayurveda, that is Jata Karma samskara. Okay? So Jata Karma samskara is done immediately after birth. The main indication is it is done immediately after the birth. The procedure is explained in quite a different way in three other samhitas. If you see Charak Samhita, we have got some different type of explanation. Shushruta and Vakvata also give some different types of explanation. So let us go with the explanation of Charak Samhita. Okay, so according to Charak Samhita, this samskara, Jatakarma samskara, which has to be done immediately after birth, contains three important steps. What are the three important steps of Jatakarma samskara according to Charak? Number one is Madhu and Grita Prashana, that is giving Madhu and Sarpi in equal quantities, maybe because dose is not mentioned. So Madhu and Sarpi should be taken and it should be given for licking of the baby by chanting the mantras. This is the first step. Second step is feeding should be started as early as possible from the right wrist. Third one is a pot which is filled with the water should be kept above the head level of the baby. Okay? So Udaka Kumbha Sthapayet. So these are actually three important steps which is present in the Jatakarma samskara mentioned by Charaka. Okay? So now Madhu and Grita, which are mixed with the gourd, and that should be given for licking immediately after birth by chanting the mantra. This is the first step. This is followed by feeding from the right wrist. The last one is a pot which is filled with the water. Udaka Kumbha Sthapayet. Pot which is filled with the water should be kept above the head level of the baby. Now let us see what are the benefits of this particular samskara. Okay, so now one of the important thing is you are giving Madhu and Grita for licking purpose. Okay, mixed with the gold also. That is
word. Now, basically by doing this, we can conclude that, or we can infer that it helps to cleanse the respiratory tract, because Madhu especially having Yogavahi property, and it is also having some Vedana Chedana-like properties. So it is Kashaya Rasa mainly. So all these things helps to clear the respiratory tract immediately after birth. Number two is Grita, which is used here. Grita is a soothing substance. So this gives a lubricatory effect. And Grita is also high calorie diet. So immediately after birth, so newborn baby will get some amount of the calories. Okay, although the breastfeeding is delayed to some extent, there is no problem because Grita is giving some sort of easily available calories. Then another important thing is, very important thing is, actually this is examination of the baby. This samskara is used to assess the examination of the baby. Now we know that when we start the feeding, three important reflexes are very important. One is rooting reflex, another one is sucking reflex, and another one is swallowing reflex. And these three reflexes should be in coordination. Okay, there should be coordination between them. बच्चा जो भी लेता है उसको swallow भी करना चाहिए. ये तीनों जो है coordination में होना चाहिए. Actually indication of feeding, जो feeding हम advise करते हैं वो ये वाला तीन reflex develop होने के बाद ही करते हैं. ठीक है? So here giving Madhu and Grita mixed with the Swarna etc. immediately after birth for licking, it is nothing but testing for these three important feeding reflexes. So once these three important feeding reflexes are present, then you indicate feeding from the right breast. That is the second step he has given. Second step is feeding from Dakshina Parshve, Stanyapan. Okay, so if these three steps, if these three reflexes are existing, it is normally developed, then you can go for feeding. In the meantime, he says that Udakakumbam Stapayet. Udakakumbam Stapana, this is to check the temperature inside the nursery. We know that importance of temperature in the newborn care. Therefore, he explains TABC of this excitation. Temperature is very important. Now, Udakakumbam Stapayet, it gives an idea that inside the room, temperature has to be maintained. Okay, if it is a cold season, then a warm water has to be put on the Udakakumbha, and if it is a summer season, cold water has to be put. This helps to maintain the temperature, constant temperature inside the room, and it also helps to check the temperature. So these three things, feeding, reflexes should be checked. Then if it is okay, then breastfeeding should be initiated immediately. And if it is okay, then anyhow, you have to maintain the temperature inside the room. So these are the three important steps mentioned by Charaka in the Jatakarma Samskara. It is nothing but preparing the baby for the feeding and maintaining the temperature. Okay. Apart from this, the Madhu also gives the cleansing effects of the respiratory tract. Grita, which is given, that gives a soothing effect and lubricating effect. And Grita is also having high caloric output. Therefore, can be used as a instant energy for the child, newborn also. Next. Another important is trophic feed. Trophic feed, what is meant by trophic feed? Trophic feed means a small amount of the feed which is given to the newborn baby immediately after the birth. The idea is to stimulate the GAT. ठीक है, सो जीएटी में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तो खिलाना पड़ेगा बच्चे को. So a small amount of the feed which is given immediately after birth to the newborn baby is called as trophic feed. It may be breastfeed itself. Breastfeed को ही थोड़ा बहुत आप पिला दिए वो भी trophic feed है. अगर breastfeed नहीं अवेलेबल है, नहीं आ रहा है, so any other small feed by maintaining the aseptic measure you can give. So here Madhu, Grita and this is given immediately after birth to the baby. Apart from checking the feeding reflexes, apart from the other benefits, it also acts as a trophic feed. Trophic feed ये देने से क्या होता है कि पूरा GAT एक बार स्टिमुलेशन हो जाता है, GAT का मेचुरेशन शुरू हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, बॉवेल्स वगैरह पास होता है, तो एक्टिव हो जाता है पूरा GAT. This feed is called trophic feed. So this samskara also helpful to attain the benefits of a trophic feed. Okay. Now, so these things are important. अब right side से ही जो है इसको क्यों पिलाना है दूध? Okay. So now there are many questions regarding this. Okay. So maybe the right side is convenient to feed the baby. Okay. For a mother, right side may be more convenient than left side to feed the baby. Number one. Number two is one side always we start the things with the right side. है ना?
हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं कि एनी ऑस्पिशियस थिंग और एनी गुड इनिशिएशंस व्हाटएवर वी डू, so in procedures and all, always it's always start from the right, not start from the left. That may be the one cause. Third one is this may be giving a message to the mother that one breast has to be completely empty fat before going to the next breast. इसलिए राइट ब्रेस्ट पहले दे दो, उसको completely एम्प्लीफाई करो और उसके बाद नेक्स्ट ब्रेस्ट में जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर मिल्क, मिड मिल्क और हिंड मिल्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है एक संदेश मैसेज मदर को देने के लिए मे बी इट इज सेलेक्टेड, राइट साइड हैज बीन सेलेक्टेड. ठीक है, आप कुछ भी इसमें अपना लॉजिक लगा सकते हैं. So this is one thing. Now here there is one more important. Madhu, Ghruta and Swarna has been given immediately after birth. The same which we follow in the Swarna Prashana also. That is what we are discussing in the last class. Swarna Prashana में हम जो करते हैं वो लेना दे के हिसाब से करते हैं. That is different. But जातकर्म संस्कार में मधु, घृत, स्वर्ण का जो प्राशन होता है वो one time procedure है. ठीक है. So this is also helpful for primary immunization response. ठीक है. यहाँ पे हम स्वर्ण मधु घृत को इक्वल प्रमाण में जो दे रहे हैं, that is also ये विरुद्धहर like substance. And when it is introduced, maybe जो है बॉडी को कोई भी एलर्जी का अगेंस्ट सेंसिटाइज करने के लिए दिस इज हेल्पफुल. सो दिस में ऑल्सो अचीव द फंक्शन ऑफ प्राइमरी इम्यूनाइजेशन रेस्पॉन्स. ठीक है. सो कीपिंग द वाटर filled on the of the filled in the pot above the head size, I told it helps to maintain the temperature. So always okay. So this is the first samskara. ठीक है. इसका some of the benefits and scientifically how you can understand the samskara. So I am not going to the details of the procedures. Okay, Charaka, Vagbata, Shushuta, they little differ in their explanation. ठीक है. जो शुश्रुत जो बोलता है वहां पे बाकी ड्रग्स को भी ऐड करने के लिए बोलता है, वचा, इंद्री एक्सेट्रा. ठीक है. पर वागबट से दिस शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वेदोक्त विधि. वेद में जो होता है उसी तरीके से इसको करना है. ठीक है. ओके. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द जातकर्म संस्कार, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. Now come to the second samskara which is mentioned, that is Dorashana samskara. Dorashana samskara is not mentioned in Ayurvedic books. Dorashana samskara is mentioned in the Dharma Granthas. ठीक है. Dharma Sindhu सारा like Grihya Sutras it is mentioned. So what do you mean by Dorashana samskara? पहली बार बच्चे को क्रडल में या डोली में डालने का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, that is called as Dorashana samskara. Okay. So this is explained in Hindu religious books. This samskara should be performed when the baby is transferred to the cradle by the mother for the first time. पहली बार मदर जो है बच्चे को डोली में जो डालती है, ठीक है, क्रडल, डोला मतलब क्रडल, क्रडल में डालती है. सो दैट ऑन दैट डे वी एक्चुअली परफॉर्म दिस पर्टिकुलर संस्कार. यूजुअली दिस इज डन बाय 12 to 13 डे ऑफ द लाइफ. 12 to 13 डे ऑफ द लाइफ हम यूजुअली मानते हैं कि उस दिन शुद्ध हो जाता है. ठीक है. सो उस दिन जो है घर को पूरा प्यूरिफाई करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ प्रसाद सब लेते हैं, ये सब होता है. ठीक है. सो 12 to 13 डे ऑफ द लाइफ में ये जो है प्रोसीजर करना है. It is very simple. First 2 weeks of the life of the baby is always under risk. ठीक है. पहले जो है 2 weeks में बच्चे को कुछ भी हो सकता है. So thing is very clear. Once this risky period is over, then the baby was kept on the cradle. Till then the baby was always kept with mother. अगर 12 दिन के बाद डोला में डालना है, इसका मतलब क्या है? पहले 12 दिन तक बच्चे को माँ का पास ही रखना है. That means mother and child should not be separated immediately after birth. This is the second message this gives. ठीक है. मदर और चाइल्ड शुड नॉट बी सेपरेटेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. दे हैव टू बी टुगेदर. वो एक यूनिट के जैसे बना है. ठीक है. बाकी लोगों को मदर और बच्चों से आइसोलेट करना है और मदर और बच्चे को आइसोलेट कभी नहीं करना है. ओके. सो टू से दिस इंपॉर्टेंट मैसेज 12 to 13 डे दिस पर्टिकुलर Dorashana samskara is performed. Okay. So now traditionally in villages and certain orthodox families, on the same day all the first degree relatives of the child get purified by Navagraha Homa, Tirtha Snana and the sprinkling of the sanctified water etc. ट्रेडिशनल ये भी फॉलो किया जाता है कि सेम दिन जो है बच्चे का जितना भी जो है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री सब रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, तो सभी ये प्यूरिफिकेशन मेथड में जाते हैं. ठीक है. तीर्थ स्नान सब करके या स्नान करके मंदिर जाके फ्रेश होके, ठीक है, अगर जनेऊ है तो नया जनेऊ पहन के पुराना कपड़ा सब चेंज करके, तो ये सब करते हैं. ठीक है. So this is to say that yes, now the baby is out of risk and the first 2 weeks of the risky period has been now smoothly passed away. So that's the message is given. Very important thing is baby and mother should not be separated from each other for the first 12 days. That is important to maintain the temperature. We know that kangaroo care में क्या होता है कि so if the mother and baby are kept together,
तो बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने में कोई इश्यू नहीं होगा. सो दिस पर्टिकुलर संस्कार ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ कंगारू कैट. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस. नंबर 3, आइसोलेशन. ठीक है, पहले 12-13 दिन में तो बहुत सारे विजिटर्स सब आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, सभी लोग आएंगे. सो दे विल टच द बेबी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो नाउ हियर, so baby and mother as a unit they will be completely isolated from the others. बाकी लोगों से वो separated है. अब cradle में पहले डाल दिया तो क्या होगा, सभी लोग आएंगे, बच्चे को टच करेंगे? No, it's not like that. Baby and mother will be kept separated in a separate room, and any visitors will not be allowed there. Visitors are allowed only after 12-13 days of the life, once the purification is over. Okay, so this particular samskara gives many messages. ठीक है, so therefore later baby will be transferred to the decorated cradle on the 13th day, while the old ladies give the tips to the mother regarding carrying the baby. ये जो डोलाधन संस्कार है basically it's a function conducted by the ladies, old ladies. ठीक है, जेंट्स को इसमें ज्यादा रोल नहीं है. Now old ladies will be there and they are now, see, always old ladies are always more क्या है कि more knowledgeable than the new doctor. ठीक है, न्यू gynecologist और न्यू neonatologist. ओके, क्योंकि दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड ड्राइविंग. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का सब एक्सपीरियंस उसको है, ओल्ड लेडीज को. सो नाउ दे विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू गिव द टिप्स टू द न्यू मदर. अगर वो प्राइमी है तो उसको पूरा टिप्स बताएंगे, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे जो है बच्चे का जो है केयर करना है. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स विल बी दिस इंफॉर्मेशन और मैसेजेस और दिस guidance will be given from the old ladies to the primary mother. Okay, so this is the importance of dola shayana samskara. So भले ही छोटा सा एक संस्कार, but it gives a maximum message. Okay, now actually about the cradles. So यहाँ पे डोला शयन है तो दो टाइप का क्रडल अवेलेबल है कि वन इज मेड अप ऑफ आयरन, दूसरा मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल जो हम कपड़े से जो बनाते हैं. ठीक है, सो बिलीफ ये भी है कि जो मेटालिक जो है वो ठीक है, नया वाला है, बट जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कपड़े को यूज करता है, वो कपड़ा जो है मदर जो है एंटीनेटल पीरियड में जो कपड़ा पहनती है, साड़ी पहनती है, वही साड़ी को जो है बच्चे को क्रडल बनाने के लिए यूज करना चाहिए. ठीक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है. सो क्या है कि वो हम बोलते हैं कि सारी इफेक्ट बोलते हैं उसको. दैट मीन सारी इफेक्ट मतलब सो बच्चे एंटीनेटल पीरियड में मदर वही कपड़ा पहनी है तो वो एक सेंसेशन बच्चे को रहता है, पहचान रहता है उसका. ठीक है, वो वार्मनेस जो है ना, वो जो कपड़े का जो वार्मनेस, जो वार्मनेस जो है वो बच्चा फील करता है, क्योंकि फीटल लाइफ में उसको उसका एक्सपीरियंस है. तो उसी कपड़े में जब बच्चे को सुलाएंगे, बच्चे बहुत अच्छा सोएगा, उसको यही फीलिंग आएगा. सो वो यूट्रस में ही अभी भी है. ठीक है, सो दिस इज थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये. ठीक है, बट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. ओके, सो नाउ ट्रेडिशनल जो कपड़े से बना हुआ जो वो डोली है, तो उसमें क्या है कि स्विमिंग मूवमेंट हमेशा जाता है. ठीक है, तो बच्चे को अच्छा नींद आएगा. और ये जो मिमिक करेगा, जैसा बच्चा फीटल स्टेज में था तो मदर ब्रीदिंग करती है तो एक बार ऊपर ऊपर नीचे होती रहती है. तो स्विमिंग मूवमेंट जो इसमें मिलता है तो बच्चे को वही मिमिक होता है. ठीक है, इसलिए बच्चा बहुत अच्छा सोता है. ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी यूट्रस में हूँ. तो नेक्स्ट, क्लोजली पैक फ्रॉम द ऑल साइड्स. जो आयरन वाला क्रडल यूज करते हैं सभी जगह में अब क्लोजली पैक नहीं होता है. ठीक है, वहां पे कपड़ा रख करके पैक करना पड़ता है. बट कपड़े वाला इसमें आप डालते हो तो शेप जो है ना वो अपने आप आ जाता है. जो लास्ट में वही शेप आ जाता है जैसे वो यूट्रस में रहता है, फ्लेक्शन वाला शेप है ना, तो वही पोजीशन में आता है बच्चा. तो नेचुरली आ जाता है. ठीक है, देन बीइंग साइड्स एंड अटेन द ओके, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल हैजार्ड्स, वो तो मिलता ही है. नॉर्मल शेप ऑफ द हेड मेंटेन करने के लिए भी जो है कपड़े वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एकदम हेड एकदम पैक हो जाता है. बट आप देखोगे मेटालिक वाला जो नया मिलता है उसमें ऐसा नहीं है. ठीक है, and it is easy for cleaning and also it is washable and it is also carryable. ठीक है, ठीक है, इसको जो है आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो. ठीक है, so less noisy compared to the iron cradle. This is less noisy when compared to the iron cradle. Okay, सारी इफेक्ट ये थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, but it is true. So these are the example. You can see the pictures that the dolly which is prepared by the, यहाँ पे जो है वो साड़ी यूज नहीं किए बट दूसरा कोई कपड़ा यूज किए, बट प्रेफरेबली साड़ी हैज टू बी यूज्ड. ठीक है, दिस इज सी वेयर द साड़ी इज यूज्ड, द सेकंड पिक्चर. Okay, this already we have seen the typical understanding of dola shayana samskara. So a baby should be separated from the mother, should not be separated from the mother for first 12 days. Prevention from the infection, they should be isolated. Baby should not be separated from the mother.
इट हेल्प फॉर द इजी फीडिंग, पहले 12 दिन में जो फीडिंग एस्टेब्लिश हो जाता है दोनों को सेपरेट रखने से। इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द मैटरनल बॉन्डिंग। ये सब होने के लिए पहले 12 दिन बच्चे को माँ का साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो क्लियरली बोल रहे हैं कि पहले 12 दिन तक आप क्रडल में मत जाओ, सीधा बच्चे को माँ का पास ही रखो। देन कमिंग टू द कंगारू मेथड, इट आल्सो फुलफिल्स द नेचर ऑफ द कंगारू मेथड, वो तो हमने बता दिया, आइसोलेशन में भी होता है। देन इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द मदर टू ऑब्जर्व द बेबी। बच्चे अपना साथ रहे तो बच्चे को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा उसका, ठीक है। सो नाउ 12 दिन के बाद क्रडलिंग वाला जो है क्रडल दोनों टाइम होगा, तो माँ भी थोड़ा, मदर इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द डिलीवरी एंड इवन मदर कैन ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेट इन द ceremony. Therefore, it is done after 12 to 13 days. Next, samskara is the procedure of naming ceremony. Naming ceremony, this is a special procedure. ठीक है, the condition, the procedure where newborn has given with one name, एक नाम दिया जाता है. Okay, but it looks like a very simple procedure. But one of the rituals, this is one of the rituals followed by the Hindus. एंशिएंट टाइप, नामकरण संस्कार का कोई नाम तो है, तो नामकरण संस्कार तो होता ही है, ठीक है। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से होता है, और नाम तो रखते ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द नामकरण संस्कार हैज बीन फाउंड इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी जो है नामकरण संस्कार के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चरक में भी है, वाग्भट में, सॉरी सुश्रुत में भी, सॉरी चरकाष्टक में भी है। हेंस नामकरण संस्कार शुड बी एनालाइज्ड अंडर द मेडिकल परसेप्शन। तो रिलीजियसली जो हम करते हैं वो तो ठीक है, बट व्हाट आर द मेडिकल अंडरस्टैंडिंग of this Namakarana Samskara that I have to be seen. Now, timing of Namakarana Samskara is very important. Again, timing जो पता है, Charaka says 100th day onwards, whereas Sushruta says 10th day afterward, after birth. ठीक है, Ashtanga Sangra also says the same thing. So 10th day along with Sutika Utthana, और 12th day, ये Ashtanga Sangra और Ashtanga हृदय का रेफरेंस है। 100th day और the first year, ठीक है। तो ये सब जो है ऑप्शन बताया कि आप 10th डे में कर सकते हो, 11th डे में कर सकते हो, 13th डे में कर सकते हो, या 1 month में कर सकते हो, ठीक है, और इवन 1 year में कर सकते हो, लाइक दैट। बट वन थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इज नन ऑफ द ऑथर्स टोल्ड दैट नामकरण संस्कार शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर 10th डे। 10th डे से पहले आपको नहीं करना है ना, कोई नहीं बताया। सो हियर लाइज द पॉइंट। वन इज नेम गिव्स ए पर्सनल आइडेंटिटी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस नामकरण संस्कार? नाम जो है आपको पर्सनल आइडेंटिटी देता है, ठीक है। So that is very important. Name is very important for any person. This is some of the pictures of Namakarana Samskara. ठीक है? So name is given during the Namakarana Samskara that for the future life it is very important to give the personal identity. Now identification is very important for keeping the medical records and to prevent the neonatal exchange in the nurseries. आपको पता है, baby A, baby B, आप जो भी लिखते हो, baby of this, baby of this, ठीक है। आइडेंटिफाई फूड प्रिंट्स भी हम लेते हैं, क्योंकि बेबी का आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विंस होता है बेबी, हम होता है ट्विंस ए बेबी, ट्विंस बी बेबी, इस तरीके से हम मेंशन करते हैं और टैग लगाते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टू कीप द मेडिकल रिकॉर्ड्स आल्सो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फर्स्ट 10 डेज इसको नहीं करना है, 10th डे के बाद ही इसको करना है, ऐसा बताया। बिकॉज फर्स्ट 10 days ऑफ द लाइफ और फर्स्ट 1 or 2 weeks it's considered as high risk period, as we explained in the Dolafenathon. It is very high risk period in the life of the newborn. So anything can happen to the baby in the first 2 weeks. यहाँ पे 10th डे बताया, हम देंगे उसको 14th डे और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। So if you consider 10 to 14 days, that is very high risk period. Now, what are the problems that can occur in the first 10 days of the life? Number 1 is if the baby is having major congenital anomalies, baby may die. Number 2, incapability like condition, baby may have to face many problems or it may die. Then certain metabolic disorders will be identified. Then severe birth asphyxia like condition है, then is a problem. So षष्ठी बाधा, so 6th day में जो है षष्ठी ग्रह का इफेक्ट होता है, that also kills them. So many जाता may also kill the baby till 10th day. ठीक है? So first 7 days are counted as early neonatal period, and from the 7th day onwards it's as a late neonatal period. So the ceremony provides an opportunity for the examination of the baby on the 10th day. 10th day baby का condition क्या है? क्या हाई रिस्क बेबी है अभी भी, या नहीं है, नॉर्मल बेबी है, स्टेबलाइज बेबी है, ये एक देखने के लिए हमें यहाँ पे एक मौका मिलता है, ओके। सो सिमिलरली यूजुअली द वेट गेन पैटर्न, ये भी पता है हमें, वेट गेन
शुरू का जो 10 दिन में है वेट लॉस होता है, उसके बाद वेट गेन का पैटर्न शुरू हो जाता है। ठीक है, इनिशियल 10% बॉडी वेट लॉस इज देयर, देन चांस ऑफ हाइपरबिलिरुबिनिया, hypercalcemia, feeding problems, hypoglycemia, hypothermia, these are very high in the first 10 days. Okay, then again late onset of septicemia or any other threatening problems will be identified. In case of baby is devoid of all the above high risk problems, then from 10th day onwards नामकरण संस्कार should be performed. इसलिए ये सभी प्रॉब्लम्स जो है पहले 10 दिन में आने का चांसेस ज्यादा है। ये वाला जो हाई रिस्क पीरियड खत्म होने के बाद ही जो है हम नामकरण संस्कार को करते हैं। इसलिए सभी ऑथर ने पहले 10 दिन में नामकरण संस्कार को नहीं बताया, उसके बाद बताया। ओके, सो दूसरा एक है कि ये जो अप्रोक्सीमेटली 10th डे बताया, बट 7th डे में जो है अर्ली न्यूनेटल पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद लेट न्यूनेटल पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसके बाद बच्चा थोड़ा बहुत सेफ होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। चलो जो भी है। एंड दूसरा कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट 10 डेज में हमें देखना है कि स्टेटस ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प विल बी चेक्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन है वो हम चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट जनरेशन परफॉर्म द सेरेमनी विद ट्रेडिशनल, आजकल हम जो भी करते हैं नामकरण संस्कार वो ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस से करते हैं और एक रिचुअल हम फॉलो करते हैं विदाउट नोइंग द मेडिकल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ नेम इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिको लीगल पर्पस इज क्वाइट ऑब्वियस। पता होगा आपको मेडिकल लीगल पर्पस के लिए नाम का with surname, initial, तो कितना important है। So name is very important for all, not only for the personal identification, for keeping the medical records and for the medical legal purpose, the name is very very important. काश्यप has not mentioned about नामकरण संस्कार। ठीक है, काश्यप में जो है नामकरण संस्कार में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, वो शुरू तो करता है संस्कार बोलाती है, बट उसमें जो है शायद दिस पर्टिकुलर श्लोक आर मिसिंग। ठीक है, देन 2 types of name will be given, one is नक्षत्र का नाम and another one is नक्षत्र का नाम एंड वन मोर इज रूढ़ी नामा, जो हम बोलते हैं उसको। नक्षत्र का नाम इज अकॉर्डिंग टू नक्षत्र। ठीक है, एंड एज पर द डोमिनेंस ऑफ द स्टार ऑन दैट पर्टिकुलर डे, एंड दिस हेल्प टू रिमेंबर द डेट ऑफ बर्थ आल्सो। ठीक है, पुराने जमाने में जो डेट ऑफ बर्थ को याद करने का भी एक था कि नाम जो रखा जाता है वो उस दिन का नक्षत्र का हिसाब से, कौन सा नक्षत्र उस दिन डोमिनेंट है उस हिसाब से रखा जाता है, उसी अक्षर में आने के लिए। तो ये तरीके से इसी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है बोल के याद करने के लिए भी वो इजी है। इट ऑल्सो हेल्प फॉर एस्ट्रोलॉजिकल, कुंडली बनाने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए भी जो है नक्षत्र का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन अभिप्राय का नाम एक दूसरा है। ठीक है, अभिप्राय का, सो 2 टाइप्स ऑफ नेम विल बी गिवन, नक्षत्र का अभिप्राय का। सो अभिप्राय का नाम इज यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस, फॉर अदर जनरल पर्पस वी यूज्ड टू कीप दैट पर्टिकुलर नेम, एंड इट हैज टू फॉलो ऑल दी व्याकरणास, जो ग्रामर को हिसाब से वो लिखना चाहिए, अंतस्था, मध्यस्या, उष्णा, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक यू मे बी नोइंग इट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द नेम। कोई भी नाम ऐसा नहीं रखता है कि पिंकी पुंकी पुंकी ऐसा बोल के कोई नाम नहीं रख सकता। इट हैज टू बी, इट शुड कंटेन ऑल 3 लेटर्स। ठीक है, वृद्धि अक्षर नहीं होना चाहिए, इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, लास्ट अक्षर क्या होना चाहिए, ये सब फिक्स है। Now, next comes one more important samskara, that is Dugdhapana samskara. Okay, Dugdhapana samskara is the testing of a tolerance capacity for the animal milk. Dugdhapana samskara is also not mentioned in the Ayurvedic classics. Okay, this is also explained in the Dharma Granthas, Hindu religious books. Okay, so this is special samskara which is mentioned in Hindu religious books, where the baby is fed for the first time with the external milk. पहली बार बच्चे को जो है external milk दिया जाता है। Okay, so usually this is performed in the 1 month of life, first month of life. Okay, so baby will be given with animal milk through a conch shell, शंखाकृति एक पात्र में जो है पलाड़ी जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसमें उसको पहली बार एनिमल मिल्क दिया जाता है, स्पेशली काउच मिल्क। Now, how to understand this samskara? Okay, it looks like a very simple samskara, but now probably this is one of the method of initiation of supplementary feeding. ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग को जो है हम इनिशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा 1 महीने में आप सप्लीमेंट्री फीडिंग देंगे क्या? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं हम 6 महीने तक, नो, ये कंटिन्यूस नहीं करते। सो ये सिर्फ बच्चे का टॉलरेंस कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा बहुत दे रहे हैं, क्योंकि इट एक्ट लाइक स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ स्लो वीनिंग, कि बच्चा टॉलरेट करता है कि नहीं, ये देखने के लिए हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, टॉप फीडिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट टाइम टू वॉच द टॉलरेंस कैपेसिटी। ये मैंने बता दिया, बच्चे का टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, इसको टेस्ट करने के लिए प्रोबेबली वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और दिस मे बी ए ट्रायल मेथड फॉर द टेस्टिंग ऑफ मिल्क एलर्जीज। काउच मिल्क एलर्जी इज वेरी कॉमन, डिफरेंट अदर टाइप ऑफ एलर्जीज आर देयर। ठीक है, लास्ट में जाके सीलियाक हाइपर डिसीज भी हो सकता है, वो भी आता है इसमें, सब एलर्जी है। तो
कोई इस टाइप का बच्चे को एलर्जी है क्या, ये टेस्ट करने के लिए एक बार आपको उस मिल्क को देना शुरू में, क्योंकि वंस यू स्टार्ट दी फलप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार एक्सेट्रा, बहुत सारे मेडिसिन बच्चे को देंगे, मैक्सिमम जो है देंगे मिल्क बेस में देंगे, ठीक है। ऑल द प्रिपरेशन सर, प्रिपरेशन गिवन टू द चाइल्ड विल गिव अंडर एज मिल्क एज द बेस, तो सभी में जो है मिल्क नहीं बना के देंगे आप, क्षीरवंती मृदु, तो क्षीर से अगर उसको एलर्जी है तो वो पहले पता चलेगा। Probably this will act as a method of prior testing of milk allergies in the growing child. इसलिए पहले ही एक दो बार उसको देख करके हम देख रहे हैं, अगर वो टॉलरेट कर रहा है तो देन इट्स नो प्रॉब्लम, टॉलरेट नहीं कर रहा है तो देन वी विल स्टॉप एंड विल गो फॉर द अल्टरनेटिव मेथड्स। One more samskara is Jalapuja samskara. Jalapuja samskara is not for the baby actually. Jalapuja samskara is mentioned for the Sutika स्त्री। सूतिका पीरियड जब खत्म हो जाता है तो वो स्नान वगैरह करके क्लीन होकर के कोई भी जो है तालाब से वगैरह जो है वो एक घट में जो है पानी लेके आती है, ठीक है। सो दिस विल बी डन ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ, ठीक है। सो ये जो है सेकेंड मंथ में जब सूतिका पीरियड खत्म हो जाता है, इट इंडिकेट्स दैट सूतिका पीरियड खत्म हो गया, नाउ मदर कैन रिज्यूम बैक टू हर नॉर्मल वर्क। Another important samskara is Suryodaya Darshana samskara. It is not Surya Darshana samskara, Suryodaya Darshana samskara. Okay. So there is another samskara mentioned in relation to that is Chandra Darshana samskara. Okay. Now what is the importance of how it has to be performed? So Suryodaya Darshana samskara is performed during the first month. Baby is brought out of the house for the first time, exposed to the rising sun and the moon. तो पहले महीने में किया जाता है। अब तक क्या है कि सूती के घर में था बच्चा, ठीक है, जातक कर्म संस्कार जब आप कर रहे थे वो सूती के घर में था, तो उसके बाद बच्चे को आपने जातक कर्म संस्कार के टाइम में बाहर लाया, घर में रखा, आइसोलेट किया उसको, ठीक है, मदर और चाइल्ड बच्चा एक ही साथ आइसोलेट रहा, और उसके बाद जो है आपने उसको क्रेडल में डाला, ठीक है, क्रेडल में डाला, और उसके बाद अब क्या कर रहे हो आप, अब जो है उसका नामकरण संस्कार भी हो गया, और अब आप कर रहे हो कि उसको पहली बार घर से बाहर लेके आया। तो दिस सजेस्ट दैट स्लोली एक्सपोजर ऑफ द बेबी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक ही बार बच्चे को बाहर नहीं लाना है, उसको बहुत स्लोली लाना है। तो ये तीन चार संस्कार जो होता है यहाँ पे, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट स्लोली बेबी हैज टू बी एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक ही बार में नहीं लाना है, सो दैट बेबी कैन एडजस्ट फॉर द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। So gradual exposure of the baby to the external environment. So usually by 1 month after the birth, the baby is completely exposed. That also indicates the completion of the neonatal period. ठीक है, 1 month का टाइम दिया है यहाँ पे सूर्योदय दर्शन के लिए। So मतलब लेट neonatal लाइफ भी खत्म हो गया, ठीक है। Now baby is called as infant. Okay, it is stabilized. So thereafter for the first time baby is exposed to sun rays. बच्चे के जो है सूरज का सन रेज के लिए अब पहली बार एक्सपोजर कर रहे हैं, ठीक है। Now what is the importance of sun rays, exposure to sunlight, and also the importance of vitamin D in the bone development? That is very important. As we see, we have seen the ricket, different types of rickets and all. Okay, so ricket is nothing but it is the disease of the growing bone. Okay, so growth of the bone जब शुरू होता है, and ricket is also called as early neonatal problem. It is one of the early infantile problem, not neonatal. ये जो rickets का जो manifestation जो शुरू होता है वो 3, 4, 5 महीने के आसपास ही होता है। 6-7 महीने होने तक जो है बोन का जो है डिफॉर्मिटी शुरू हो जाता है बच्चों में आना, ठीक है। सो दिस इज द डिजीज ऑफ अर्ली इन्फेंटाइल पीरियड। नाउ हियर सूर्योदय दर्शन, while we are studying the rickets and its importance, and we have studied the importance, we have seen the importance of sunlight exposure. न्यूबॉर्न को जो है एक दिन में कम से कम 20 मिनट तक जो है सनलाइट विंडो के थ्रू आना चाहिए, उसके ऊपर गिरना चाहिए, और कितना स्क्वायर मीटर में गिरना चाहिए, सब हमने बताया, ठीक है। सो सनलाइट के लिए बच्चे को अर्ली इन्फेंटाइल पीरियड में एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट रिकेट लाइक डिसऑर्डर्स बाय इनिशिएशन ऑफ विटामिन डी प्रोडक्शन थ्रू द स्किन, ठीक है। थिंग इज, इवन मदर इज फीडिंग द बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ विटामिन डी, इसलिए स्किन के तो जो है विटामिन डी का प्रोडक्शन यहाँ पे बच्चों में होना बहुत जरूरी है। सो नाउ दिस संस्कारा where we are exposing the baby to the Surya sunlight for the first time, give a message to the parents and mother that here afterwards you have to daily expose your baby to the sunlight. That is very important. 1 month afterwards, that means for the next few months, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, okay,
it's very important to daily give sufficient amount of sunlight or expose the baby to sufficient amount of sunlight so that vitamin D production starts and and the bone development will be proper and we can prevent the nutritional rickets and also we can prevent the other complications of the rickets. Rickets शुरू ही इस टाइम पे होता है. Okay, therefore it is the early infantile disease है. ठीक है, और उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेशन होता है 1 साल के बाद जो उसको कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ता है, तो बोल एक्स ये वो सब शुरू यहीं पे होता है. सो देयरफॉर नाउअडेज वी आल्सो गिव द विटामिन डी supplementation immediately after birth. The same message is given by Ayurveda through the Surya Darshana Sanskar. That's all. Similarly, Ayurveda also says that same should be also exposed to baby should be also exposed to moonlight at night hours. ठीक है, so moonlight exposure at the night hours help for the macular fixation and all those things. ठीक है, बच्चा मून को देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, वो सब चीजें हैं. So that also we will see. So exposure of the moonlight in assessment of development. Now moon is very important. Okay, so जो चंद्र है वो चंद्र जो है मनस का देवता माना जाता है. चंद्रमा मनसो जातक्षो जायते. That means मनस is representing चंद्र. हमारा बॉडी में जो है मनस है वो चंद्र का रेप्लिका है. ठीक है, लोका साथ में लोका पुरुषवाद में. So manas is formed from Chandra. So if you are exposing the baby to Chandra, then the soothing rays of the moonlight brings mental relaxation and stability of psychological facets in the growing child. देखो मून को दिखाते हुए जो है बच्चा बहुत खुश हो जाता है. मून को दिखाते हैं, अब जब एक्सपोज करेंगे बहुत तो उसको देके उसको बोलता है आप उसको लेके आओ. ठीक है, so that means चंद्रमा को मनसा जाता. Mana is formed by Chandra. Therefore there is a direct relationship. Okay, so now traditionally we find that Indian mothers showing the moon when the child is crying at night hours. आप देखे होंगे ट्रेडिशनली गांव में जो है जब बच्चा बहुत ज्यादा होता है उसको मून को दिखाते हैं. इससे बच्चे का क्या होता है कि मन प्रसन्न हो जाता है और बच्चा चुप हो जाता है. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. ओके, नाउ वी हैव गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मून ऑन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. मून जो है अर्थ में जो भी है वो सबके ऊपर मून अपना इफेक्ट डालता है. आप यू कैन सी द ओशन. सागर को देखते हैं जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सागर दिख सकते हैं, आगे और पीछे चला जाता है. इतना बड़ा सागर को जब मून हिला सकता है तो मनुष्य को भी हिला सकता है, बच्चे को भी हिला सकता है. सो देयरफॉर वी फाइंड सम ऑफ द बेबीज एक्ट इन डिफरेंट वे. क्या है कि कुछ बच्चे जो है कभी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोना, इरिटेबल हो जाता है. यूजुअली दिस हैपेंस इन अमावस्या. अमावस्या में क्या होता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष है. कृष्ण पक्ष में जो है चंद्र का बल क्षीण होता जाता है. जब चंद्र का बल क्षीण होता जाता है तो इसका प्रभाव बच्चा और किसी को भी जो है अपना मन के ऊपर डालता है क्योंकि चंद्र का बल क्षीण होता जाता है. सो दैट लीड्स टू इरिटेबिलिटी एंड डिस्टर्बेंस इन द मेंटल फैक्टर्स. इन सम ऑफ द बेबीज क्राइंग एक्सेस, बहुत जिद्दी होते हैं. अमावस्या पूर्णिमा आने जो है बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं. तो इस तरह के जो वेरिएशन है पूर्णिमा और अमावस्या में बच्चों में कॉमन है. सभी बच्चों में नहीं मिलता है बट बहुत बच्चों में ये कॉमन है, आपको मिलता है, प्रैक्टिकली ये मिलता है. ओके, सो एनीवे दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोजर टू मूनलाइट. सो क्या है कि मैकुलर फिक्सेशन के लिए और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो हम बोलते हैं उसको टेस्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मून तो बहुत किलोमीटर ऊपर है ना, बहुत फार अवे है. तो उसको अगर बच्चा देख पाता है तो ही इज एबल टू फिक्स इट्स विजन. मैकुलर फिक्सेशन के लिए वो हेल्प करता है. सो सूर्य दर्शन नहीं है, सूर्योदय दर्शन बताया. सो सूर्योदय दर्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सूर्योदय मतलब उदित सूर्य, जब सूर्य रेज होता है तब दिखाना है, ऐसा होता है. Again, the concept is very clear. It is told that when the sun is rising, the rays which are coming from the sun is considered to be having very near to ultraviolet range. ठीक है, सो विटामिन डी का जो स्टिमुलेशन करने के लिए, विटामिन डी सिंथेसिस का जो स्टिमुलेशन करने के लिए स्किन के ऊपर कौन सा लाइट गिरना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज हैज टू बी फॉलो. ठीक है, सो देयरफॉर इट इज स्पेशली मेंशन्ड टू एक्सपोज द सन to the newborn baby or infant, especially सूर्योदय एंड सूर्यास्त. सूर्योदय और सूर्यास्त में बताया यहाँ पे, इसलिए सूर्य उदय होता है. ठीक है, सो नाउ दिस आल्सो इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द न्यूटल पीरियड एंड ऑनसेट ऑफ द इन्फेंसी. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. नाउ देयर आर सम अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू सूर्योदय दर्शन. ओके, सो लुक एट द ऑब्जेक्ट. सूर्य को देखना है तो उसका नेक होल्डिंग का टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है. ओके, नेक होल्डिंग कब आता है आपको पता है, 3 मंथ में नेक होल्डिंग आ जाता है. सो उसके ये नेक को होल्ड कर पाता है या ऊपर लिफ्ट करता है, इससे टेस्ट हो जाता है.
Health control also you can assess. Okay. Next, exposure of the baby to the ultraviolet rays and importance in the vitamin D synthesis we know. Persistence of same indicates hydrocephalus or increase in intraocular pressure. 2 महीने भी 1 महीने के बाद भी जो है बच्चा थोड़ा बहुत भी अपने हेड को लिफ्ट नहीं कर पाता, हेड लैगिंग हो रहा है, that suggests that there may be growing hydrocephalus or there may be increased intracranial pressure. So this can be diagnosed. Then फिजियोलॉजिकल फोटोफोबिया होता है. न्यूबॉर्न बच्चे जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कभी आंख ओपन नहीं करता है जब उसको आप लाइट को एक्सपोज करेंगे, आंख को बंद करके रखता है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है. अगर बच्चे ने ओपन कर दिया आंख तो उसका रेटिना का डैमेज हो जाएगा. तो देयरफॉर बेबी विल हैव फिजियोलॉजिकल फोटोफोबिया, आंख बंद करके रखता है व्हेनेवर इट इज एक्सपोज्ड टू द लाइट. बट 1 month टाइम यूजुअली फिजियोलॉजिकल फोटोफोबिया विल गो टू डिसअपियर. ठीक है, वो स्ट्रेंथ आ जाता है, मैच्योर हो जाता है. सो in that you are exposing the baby to the surya light. Again, it is a logical. Then child should be first exposed to the soothing moonlight and then it should be exposed to the sunlight. Okay. So this test for the macular fixation and child is able to move the head in a certain degree. बच्चे का जो नेक का मूवमेंट भी आप देख सकते हो जब वो सूर्य को देखता है. Okay. So these are some of the important effects related to Suryodaya Darshana Samskara. Another samskara which is mentioned is a Nishkamana samskara. Nishkamana samskara, it should be done. Nishkamana samskara is the first time taking the baby away from the home. Formless. अब तक हम बहुत स्लोली बच्चे को एक्सपोजर कर रहे हैं बाहर के लिए. सूती के घर से ये आ गया घर में उसको आइसोलेट बना के रखा. उसके बाद हमने उसको लाया कडल के बाद हमने लाया उसको घर के आंगन में, और अब हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं. निष्क्रमण संस्कार फॉर द फर्स्ट टाइम. Okay, usually for the first time, this is done on the usually on the 4th month of the life. 4th month. ठीक है. So usually we take the baby for the first time to a temple. आजकल बहुत जल्दी बच्चे को लेके आ रहे इधर उधर, ऐसा नहीं करना. ठीक है. 4th month में usually we will perform this. Now first time it's taken to the temple nearby. Now 4th month में बच्चे का बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है, स्पेशली सोशल स्टाइल डेवलप हो जाता है. ठीक है. हेड मूवमेंट आ जाता है, नेक का मूवमेंट आ जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट, बच्चे बेबी इज एबल टू मूव द हेड इन 360 डिग्री, दैट मींस 180 डिग्री आल्सो. ठीक है, बहुत सारी चीज आ जाए. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर संस्कार गिव्स द ओकेजन टू टेस्ट ऑल सच फैसेट्स. सो नाउ व्हेन यू टेक टू द टेंपल टेंपल में क्या होता है, बहुत सारे फ्लैग्स वगैरह होता है ना, झंडा वगैरह होता है. सो रेड और डिफरेंट कलर फ्लैग्स विल बी देयर. सो दिस इज हेल्पफुल टू सी whether baby is appreciating these flags and all. Color vision और accommodation reflex test करने के लिए helpful है. Okay. In the temple we also have different types of bells होता है, घंटा होता है. ठीक है. So ringing of the bells that helps to see the response to sounds. Okay. This is one of the best method to see deaf mutism में क्या बच्चे को deaf mutism में क्या आजकल हम बैरा करते हैं, तो बैरा से अच्छा ये आपका बहुत अच्छा टेस्ट है. ठीक है. Response to the sound, identification of the deafness and the earliest. Next, looking at the God, मंदिर में जा रहा है, गॉड की तरफ देखता है, बहुत सारे लोग हैं, सबको देख रहा है. हेड कंट्रोल, इज एबल टू लिफ्ट द हेड एंड सी. ओके, सो इट्स आल्सो अ टेस्ट फॉर द हेड कंट्रोल. नेक्स्ट, बोविंग द हेड टू द गुरुस. मंदिर में जाके बहुत सारे पुजारी लोगों को, प्रीस्ट को हम बच्चे को चरण स्पर्श करा देते हैं, जो भी है. सो अगेन द बोविंग हेड टू द गुरुस दैट हेल्प्स टू सी द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द नेक. देन मेनी अननोन पीपल विल बी देयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मंदिर में जाएंगे तो वहां पे अभी तक बच्चा किसके साथ था, पेरेंट्स के साथ था और रिलेटिव के साथ था, जो नॉन पीपल थे. अभी पहली बार बच्चे बहुत सारे अननोन पीपल को देखा. ठीक है. नाउ सी द रिस्पांस ऑफ द बेबी व्हेन इट एक्सपोज्ड टू द अननोन पीपल. ओके. सो यूजुअली बेबी रिस्पांस इन डिफरेंट वे. कभी कभी बच्चा लाफ कर सकता है, हंस सकता है, कभी कभी बच्चा रो सकता है दूसरों को देख के, और माँ को वापस रिवर्ट बैक और माँ को कस के पकड़ सकता है. तो बहुत सारे रेस्पॉन्स होता है अननोन पीपल को देखने के बाद, बच्चा डर जाता है. ठीक है. तो दिस रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज बेबी इज नॉट शोइंग एनी सच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स दैट सजेस्ट दैट बेबी इज नॉट मेंटली करेक्ट. ठीक है, मेंटली परफेक्ट नहीं है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. नॉर्मल बेबी ऑल दिस डेवलप बाय द एंड ऑफ द 4th month. सो दिस इज a very important test for all such situation. Now usually response for the greeneries, जब बाहर जाएगा बहुत सारे ग्रीनरीज देखेगा, ट्रीज, बर्ड्स वगैरह देखेगा. तो baby is watching everything. Usually at the end of 4th month, baby is watching everything and baby is exploring the world. हर चीज को देखता है, इधर देखेगा, उधर देखेगा, इधर से साउंड आ गया, इधर देखा. तो इतना एक्टिव रहता है at the time of at the month of 4th month. So we have to look for all such activities of the baby. Then
4th month is the period where the social smell is completely developed. ठीक है, so 3rd month से शुरू हो जाता है, usually 4th month होता है social smell completely developed होता है. Now see the social smell, how baby responds to the mother and how baby responds to the unknown person. जब टेम्पल में लेके जाएंगे बहुत अच्छा मौका है, how baby responds to the unknown person. ठीक है, वो unknown person उसका क्या है कि रेस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है. जैसे मैंने बताया, वो हंस भी सकता है, कभी कभी रो भी सकता है, कभी कभी डर भी सकता है. ठीक है, और वो चुप चुप के देख भी सकता है, एक बार मदर को देख रहा है, उसको देख रहा है. So all such responses are very very important. Okay, and this also helps to see the social smile development. So this is one of the important tests for the testing of social smile. Social smile development is very important as far as social developmental domain is concerned. ठीक है, ऑटिज्म सब डेवलप करने के लिए. ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट, सोशल स्माइल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑटिज्म में. Okay, so this may helps to early identification of the autism. Okay, so this is about निष्कर्ष संरचना शॉर्ट. बाकी मेरा बुक्स में सब लिखा हुआ है, you can see that. So next samskar is annaprashana and falaprashana samskar. So today this much is sufficient, and you again go and revise the same, and from the next class we will continue on the same. Thank you.